Namaste, good day friends. This is Yugal Parashar, editor of the Indian News. Friends, we have with us today Mr. Rahul Chopra, the ACT candidate for Mt.Roskill Electorate. Welcome back to Indian News, Rahul. It's always good to talk to you and interact with you, not only on political issues, on a personal basis as well. How are you today? Good afternoon. Namaste, Yugalji. Always good to be back with you on the Indian News. I'm very, very well. A little busy, but that's okay. How are you? Very well, thank you. Now, Rahul, as far as I understand about your personal or professional background, it is not a political background. So, how you ended up being an ACT candidate? So my background, I migrated to New Zealand in 2004 as a student. Um, I worked my first full-time job with a bank as a banking consultant for about 3.5 years. Yeah. And then I went to Auckland University to study a master's in public policy and governance. Hmm. This is where my journey in public service within New Zealand started. I worked with parliamentary services and Kanwaljit Singh Bakshi, the former national MP, Yeah. for 8.5 years. I have since been working with David Seymour, the leader of ACT New Zealand, for just under 3 years now. Uh, and my education, my skills is what has basically put me in the area of civil service or public service in New Zealand. When I worked in Manukau East or Panmure Otahuhu, I got a very good understanding of some of the community issues that sometimes we don't even pay attention to. Yeah. These could be on health or education or even local issues like roads and which particular road or motorway is handled by the central government, while how local roads are run by the local authority. Mhm. Um, I have also moved on and established myself as a some experience in the governance area as well. I sit on 3 governance boards: um, the Life Cycle Association of New Zealand, Carbon and Energy Professionals, and the Department of Conservation. So all this has given me skills in public policy, in governance, in being able to understand the issues from the ground and how these can be improved and good public policy that is relevant to the masses put out in terms of practical solutions. Based on all this, like I said to you earlier, I'm currently working with David Seymour. Yeah. He encouraged me to stand for the ACT Party, and my values and the values of ACT align. That's the reason I agreed to be a candidate for Mt.Roskill. Now, Rahul, ever since your candidacy for ACT for the Mt.Roskill Electorate was announced, it must have been a very busy and a stressful time for you personally and your family as well. How you have been, or your family has been coping with that situation? Um, Yes, it's been a very, very busy period, much Mm. more busier than I or even my family anticipated. Mm. But at the same time, the amount of love, the amount of affection that we have all received, not just me, Mm. but my family, but my campaign team as well. So we have been meeting and greeting people most weekends, and I on my own or with some members of my volunteer team during the week. Um, and this is what has energized us. This is what has kept us going, that even though this is the very first time I'm trying my I guess effort in being a political candidate, Yeah. um, my connections with the community from ground up rather than from someone who's just landed from nowhere, that I have built over the years while working in this area, Mm. have really assisted me and helped me in connecting with the people, being able to listen to their questions, concerns, or feedback, and being able to propose some good practical solutions from that party. Great. Now, Rahul, since the Bharati Mandir, the oldest temple of New Zealand, is just one door away from our office, and I see you there quite regularly, coming to Mandir. So, does your faith help you in coming out of any stresses, or you get some inspiration from your faith, or practicing or coming to Mandir to pay your obeisances? How does it work? Like, you have been quite regular. I see you there quite regularly. Hmm. Uh, so, in addition to coming to the mandir, Yeah. I am a regular at
many gurdwaras as well. Oh yeah. I would like to share that when the North Shore Gurdwara was being established and it was being set up in homes, तो जो संगत आती थी वो घरों में आती थी, तो मैं उस टाइम से नॉर्थ शोर के गुरुद्वारे का वॉलंटियर रहा हूँ. अब वो घरों में घर से बाहर आके ब्रांच आउट होके एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया है. So this we are talking of द नॉर्थ शोर सिख गुरुद्वारा. okay. तो क्योंकि मैं उस तरफ रहता हूँ, Very good. तो that's where आई, मतलब मंदिर तो मैं आता ही था, गुरुद्वारे भी सेवा करने खूब जाता, पहले से भी जाता था, और वहाँ जब मनका ईस्ट में काम करता था तो वहाँ भी जाता था. ऐसे ही जब कैंपेनिंग के टाइम पे मैं ये जो हमारी माउंट रॉस्किल में मस्जिद उमेर है या कोई भी और मस्जिद है, वहाँ भी मैं गया हूँ, चर्चेज में भी मैं गया हूँ. तो ये सब मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे एक अंदर से क्या जो कॉमनैलिटी है सब रिलीजन्स की, वो यही है कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमें ह्यूमैनिटी में बिलीव करना चाहिए. अगर मैं सिर्फ अपने कल्चर की बात करूं तो हमें तो ये वसुदेव कुटुंबकम का जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा से किसी भी मंदिर में चले जाएं, यही सिखाया गया है कि सब सब क्या जो सब एक ही है. We just practice it different ways. बिल्कुल ठीक बात है. तो यहाँ पे जैसे हम महात्मा गांधी सेंटर भी जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो इसी थॉट प्रोसेस से हम अपनी जो उस दिन का कार्यक्रम है, उस शाम का कार्यक्रम है, उसको शुरू करते हैं. तो वो एक बहुत ही यूनिफाइंग फैक्टर है मेरे लिए, बहुत ही एक डिस्ट्रेसिंग फैक्टर भी है कि आके यहाँ पे मंदिर में बैठो, थोड़ी देर आरती सुनो. तो आरती में हम क्या बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड, राहुल. So what were those policies or the values of ACT party? Does that resonate or align with your thought process or the family background or the community you belong to? Does ACT party's value resonate with your own values? अगर if I talk about my values, I definitely believe in free speech, being able to speak your mind, but at the same time have the responsibility for your actions. Or being a migrant, when I decided to migrate, the idea was that I have some aspiration and ambition that I would like to migrate to New Zealand with, and of course with my hard work, being able to use my skills and knowledge, I can set up a good base for myself here. These are the very values that ACT Party stands for. We also stand for equality of opportunity, meritorious growth for any person who is happy to work hard. But that doesn't mean that we do not want to support people who need support. What we say is we'll support you because we would like to offer you that helping hand or assistance when it's required. But we do not believe in the idea that it has to be intergenerational. As long as any person is ready to work hard, we would definitely support them. आपने मेरे बारे में पूछा, तो 18 साल से मैं हूँ यहाँ पे. तो 18 साल की जो मेरी जर्नी रही है, उस जर्नी के चलते मैं आज आपके साथ बैठा हूँ. मैं यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के चलते बहुत कुछ अचीव किया है, पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, अपनी जॉब्स में. तो वो हम सब के लिए रोल मॉडल हैं. तो वी शुड ट्राई टू एस्पायर कि वी आर अ कंट्रीब्यूटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जहाँ हम रहते हैं. Great. Now, Rahul, public policy issue of education, healthcare matter a lot of people to Indian origin. What's ACT party's instance on providing solution for these? तो इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट हेल्थ केयर, युगल जी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो करंट सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फंडिंग की वजह से आ रही हैं. उस फंडिंग जो गैप है उसको एड्रेस करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, जो वेस्टफुल स्पेंडिंग हो रही है, अननेसेसरी कल्चरल रिपोर्ट लिखी जा रही है, अननेसेसरी जो भी वेस्टफुल जहां भी कंसल्टेशन पे पैसा लगाया जा रहा है, millions of dollars being wasted on consultation. That's right. So rather than waste all this money on consultation, change of signs, we should focus on issues like किसी को अगर घुटनों का सर्जरी करानी है, तो जब हमने मंदिर की बात करी, मंदिर में मैं एक आंटी को मिला था,
2.5 years से उनकी सर्जरी लटकी हुई है। मैंने उनको पूछा, तो वेट लिस्ट वेरी 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 लॉन्ग। तो हमें इस कंट्री में क्या चाहिए कि हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, स्पेशलिस्ट हो, नर्सेज हो, मिडवाइफ्स हो, जो केयर कर सके इन लोगों की और ऑस्ट्रेलिया ना भाग जाए। तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो आपका यहाँ का जो टैलेंट पूल है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो उनको लेने के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं उनके लिए। तो हमें अपनी एक तो वेस्टफुल स्पेंडिंग कट करनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे। अगर मैं एक सिंपल सी एनालॉजी अगर यूज़ करूं, अगर मेरे पास छोटी सी कटोरी है, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा खाना है, तो अगर हम दोनों साथ में बैठे हैं तो क्योंकि हमारा जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो जो हमारे पास है हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 56 भोग हैं तो मैं आपको भी ऑफर अच्छे से करूंगा, मन से करूंगा, उनको भी करूंगा, इनको भी करूंगा, जो जो यहाँ बैठा रहेगा उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से ऑफर करना चाहूँगा। ऐसे ही अगर इकोनॉमी का जो पाई है अगर वो बड़ा हो जाता है तो हम हेल्थ केयर में भी और पैसे लगा सकते हैं, एजुकेशन में भी और पैसे लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ एरियाज में नीड है और मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने में नीड है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको अगर न्यूजीलैंड के सिस्टम में थोड़ा हमें उनको इम्बाइब करना है, उसमें जो ट्रेनिंग चाहिए वो दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो एक्ट बोलती है कि हमें देने चाहिए। अगर माउंट रॉस्किल की स्पेसिफिकली बात करूं, यहाँ पे कई सारे मैंने जब लोगों से बात करी, कई सारे ऐसे ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जो अपने स्किल से कहीं नीचे का काम कर रहे हैं। और ये एक बिल्कुल सच बात है। मतलब आप तो मेरे से पहले करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो आपने भी ये पाया होगा। क्या हम उनको उनके स्किल लेवल का काम नहीं दे पाएंगे? अगर उनकी कोई शॉर्टेज है, चाहे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में, चाहे उनकी सीवी राइटिंग में, कुछ भी है, तो हम चाहेंगे कि ये जो रादर देन अननेसेसरी वेस्टफुल स्पेंडिंग हो रही है, चाहे वो मिनिस्ट्रीज बनाने में हो रही है जिनका कोई आउटकम नहीं आता है, जहाँ पे टैक्स पेयर पैसा लगता है, ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत एग्जैक्टली होता है, तो वो सब वहाँ हम पैसे लगाएं जहाँ से कुछ रिटर्न आए, ताकि इस कंट्री का आगे बढ़ोतरी हो। ग्रेट राहुल, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, अभी लेटली उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया गया, दैट्स इमिग्रेशन एंड रीयूनिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. It's important issue for all migrants, but since you represent the Indian community in this country, you'll be, if you are elected, you'll be representing the electorate with the most diverse electorate in the whole country. So how does the ACT party perceive this issue? So in terms of the policy that we have put out for immigration, we are the only political party जिसने आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है इसके लिए। अगर मैं अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, पर्टिकुलरली जो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के बारे में और डिटेल में बात करूं, तो सिर्फ हम ही हैं कि जो कह रहे हैं कि हम एक पब्लिक हेल्थ फंड बनाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हर साल $3,500 देना है, $3,500 a year। उसमें क्या है कि करंटली एज सिटीजन्स, मैं और आप, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जा सकते हैं। Sorry, so who is going to put that money? जो एप्लीकेंट है, Okay. जो एप्लीकेंट है वो उसमें पैसे डालेगा, Okay. और वो उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, और उनको जो हेल्थ केयर मिलेगी वो इक्विवेलेंट टू एनी सिटीजन और रेजिडेंट। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय एब्सोल्युटली। ओके। मतलब इसमें ये जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जीपी केयर उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। जीपी के पास आप जा सकते हैं, जीपी विजिट्स, हाँ जी, जनरल प्रैक्टिशनर विजिट्स, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जो अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो मैंने अपने जो कम्युनिटी सर्विस के बारे में आपको बताया, जो मैंने कम्युनिटी फेसिंग जो काम करा है पिछले ऑलमोस्ट 12 साल से, उसमें मैंने कई बार देखा है कि जो हेल्थ केयर के जो बिल्स होते हैं वो कई बार $1.5 लाख, $2 लाख, ऐसे ऐसे बिल्स मैंने देखे हैं। तो अगर हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको एक सेट अमाउंट हर साल चार्ज करेंगे, $3,500 एंड नो मोर, तो वो आपके लिए यानी कि एप्लीकेंट के लिए भी कंड्यूसिव है, और जो लोकल पॉपुलेशन है। Is it on the lines of that Ayushman Bharat which runs in India? This kind of insurance, health insurance. हाँ. So yeah, they cover up to I think 10 लाख रुपए या 1 बिलियन रुपीस के बराबर कवर करते हैं वो। तो इसमें तो हम there is no upper limit. Basically, if ever you need it, that is there for you. अगर उसको कंपेयर करूं जो बाकी पार्टीज ने कहा है, वो क्या कह रही है, आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लीजिए,
तो क्योंकि मैंने प्राइवेट इंश्योरेंस ली हुई है, मुझे पता है कि वो ये जरूर पूछते हैं आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है, Yeah, और accordingly अगर the premium एग्जिस्टिंग will कंडीशन change. है तो वो आपको एक्सक्लूड कर देंगे। Yeah, तो and the आप premium also increases. बिल्कुल, तो उसमें क्या है, इफ दैट हैपेंस टू यू, and unfortunately whosoever the applicant is, basically they are in the doldrums again, because the insurance won't cover it. um, the bill will actually be either the sponsor or the applicant to pay, and many times what I have seen is the applicant runs away, the sponsor says I'm sorry I can't afford it. So who loses? The country loses, and that's when there is political resentment that we shouldn't be supporting. So again, because ACT is a party of practical solutions based on data, based on input, हमारा ये solution है, ये public health fund create करने का, ये बहुत practical है. That's indeed a great offer. Now, Rahul, a very important, we have been listening about it for last few weeks now. Some of the Indian candidates are being intimidated and threatened by some, unknown elements. Are you aware of this thing? And have you ever faced this kind of situation during this election campaigning? Um, Not during this election campaign, but I read what was reported. Yeah. And because I've worked in Manukau East, like I said, there were instances then, but fortunately for us, we were able to resolve it amicably at that point of time. Okay. If I talk to you about a particular incident, I was at a Meet the Candidates event yesterday evening, and I found the crowd to be not particularly very pleasing. They were skewed, of course, in their political alignment, but overall, it was a good Meet the Candidate event. It's sometimes this particular business or the area we work in, it's very passionate. It brings the best and the worst out of everybody and anybody. Yeah. And it is up to us to contain our emotions and work on facts. Great. Any message for your prospective voters? Yes. If you believe in ambition and aspiration, if you believe in a future for New Zealand, which is not restricted by anything but your skills, if you believe that it's time for real change rather than the same old stale promises made by the two large political parties, then I urge you and I suggest you to party vote ACT. Thank you. On that note, we come to the end of our conversation. Thank you, Rahul, and all the very best for your elections. Thank you. Thank you for your time. Thank you.